बेटे अब हम इक्विलिब्रियम का एक और टॉपिक करते हैं, दैट इज ओस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ। इसमें एक्चुअली एक इक्वेशन आता है बाद में जो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। ओस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ बेसिकली एक डेरिवेशन के बाद का इक्वेशन है, देन उसको अप्लाई करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन से है और इसमें इक्विलिब्रियम लगा के इक्वेशन देखना होता है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है। तो एक हमारे पास एक ये डेरिवेशन है पहले, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट आता है। तो हम देखते हैं कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो उसका एक कटाइन बनेगा, दैट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव एक्वस, एंड बिकॉज वी हैव टेकन सॉल्ट एज ए बी, सो ए पॉजिटिव इज द कटाइन एंड बी पॉजिटिव इज नेगेटिव आयन. So this is the ionization of weak electrolyte in the aqueous solution. If you apply the law of chemical equilibrium says Kc is equal to concentration of product, that will be A positive aqueous and B negative aqueous over the concentration of reactant, concentration of AB and concentration of water. Since we know H2O is a pure liquid, so concentration will be taken as 1. Then the K, you can take Kc or K which are equal. A positive, B negative aqueous and AB. Right, now we need to also do some ionization equation. Suppose AB plus H2, I am writing it again, A positive and B negative. If you have taken initial concentration is C, so you don't need to take the concentration of water because it is constant, then the initial concentration will be 0. And at equilibrium, if alpha has been dissociated with electrolyte, C is multiplied with the concentration, so the formation of ions will be alpha and alpha. This is another concept that you need to apply in the initial stage. Only the concentration of reactant is taken and product is considered to be 0. When there is a dissociation of some salt to their ion, it is called degree of dissociation or degree of ionization. Alpha is an important term in equilibrium. It is called degree of ionization. So basically now we can put this value in the above equation. So you get K is equal to, that is alpha into alpha over C 1 minus alpha. So basically you need to write C alpha and C alpha. This will be C alpha because concentration need to be multiplied. It is C alpha square because this is 1 minus alpha. What condition is written? यहाँ पे एक condition लेनी पड़ती है. If alpha is very small. Why so? Because weak के लिए alpha की value बहुत कम होती है. Degree of ionization of weak electrolyte is very less, so you need to neglect it. That's why this is assumption is taken from the Ostwald dilution. Many of the time you need to eliminate this term and you can go directly with K is equal to C alpha square. So you can clearly see that alpha square is K over C, and you can write this K over C. This is called degree of ionization is inversely proportional to the square root of concentration. Clear? This equation actually holds the Ostwald dilution law. You need to understand this. अल्फा के लिए जो ये फॉर्मूला लिया जाता है, इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो यहाँ से एजम्पशन से की गई है कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम होती है, इसलिए नीचे की डिनोमिनेटर की टर्म को हम इग्नोर करके इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं. ये ओस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ है. द इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन मैनी प्लेसेस वेयर यू आर टेकिंग अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सम cases will be changed. So this is all about the Ostwald dilution law. Thank you.